Munir's statements show an increasing sense of imbalance. How do you look at recent sequence of events? Pakistan is imploding from within, economy is in shambles, army is losing ground, and what you see in his statement is desperation and a man who's increasingly losing control of the internal situation. Munir is going all out against India. जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि वो कह रहा है कि हम खुद जाएंगे अपने साथ आधी दुनिया को लेते जाएंगे. You are saying that the army is losing ground, but it seems the otherwise. Thank you, Mr. Dinkar Srivastava ji, Ambassador Dinkar Srivastava ji. Thank you so much for joining us. Let me introduce you first. You have served in Karachi as a diplomat. You have served as an ambassador to Iran, and recently you have negotiated Chabahar port. You are seen as one of the authority on the affairs in this region. You are coming up with a very good book on Pakistan strategies, ideologies. So let me just begin by asking you about your book and give us a brief sense of that book. My book, Pakistan Ideologies, Strategies and Interests, looks at the deeper impulses behind Pakistan's creation and its trajectory since partition, and the role of ideology, which was described by General Ayub as Islam. And the ideology of Pakistan was also mentioned by Munir in his speech of 16th April, a week before Pahalgam. Sir, how do you look at recent sequence of events? Like Munir is going all out against India. In fact, he has threatened from an event in Washington American soil about he threatened India of a nuclear threat. He also said that we are going to attack by missiles your dams and all that. Such aggressive statements are coming from there. How do you read this, sir? Munir's statements show an increasing sense of imbalance. That statement he made in US recently against India, he also said that Pakistan will take half the world down with it. So Pakistan is imploding from within, with military operations going on in northwest frontier in Bajaur area and also in Balochistan. Economy is in shambles. Army is losing ground. Its legitimacy is challenged by Imran Khan. So what you see in his statement is desperation and a man who's increasingly losing control of the internal situation. But sir, we recently saw that he's elevated even further. He's awarded, and so how do you look at it? Like you are saying that the army is losing ground, but it seems the otherwise. They had to invent this fiction to hide the fact that Pakistan lost. And this is something like 1965. For years after 65 war, Pakistanis were convinced, the ordinary people, they were convinced by the government that Pakistan had won. And actually, as everyone knows and Pakistanis themselves say now, they lost. So his elevation to Field Marshal's rank was basically to hide army's discomfiture. So where do you see it going now, sir? Like the conflict between the two countries, and amid this kind of leadership in Pakistan, how do you see things turning out now? There will be a lot of noise. And as I mentioned earlier, it's linked also to internal situation. But I think Operation Sindoor has taught them a lesson. It was the Pakistani DGMO who asked for peace. So the army will be extremely careful in launching any such adventure. Sir, but what we are seeing now is that Pakistan has got very close to US. Munir has gone there twice, and there is definitely a cozying up of relationship which were frozen from last 2 decades almost. So, and secondly, Pakistan is also in bed with China. So this has, in a way, changed the calculations in the region. So how do we look at it, since you are a very, very close watcher of that region?
I served as Indian ambassador to Iran, and so I'm aware of the relationship between the two countries, Iran and Pakistan. Iran has built a 700 kilometers boundary line on Pakistan's border, which tells you about the state of relations, and there have been missile exchanges between them. Now, your question about his two invitations to US, and that has nothing to do with India or Kashmir. This is simply, you know, I think complete misreading of the situation. It is linked to the situation in Iran. America needs Pakistani support against Iran. And you look at the sequence of events. 10th June, General Kurilla, the head of the CENTCOM, Central Command, gave a testimony in the US Congress that this is the right time to hit Iran. He also gave a compliment to Pakistan for helping in terrorism. There's been no major breakthrough on terrorist front, no new catch, nothing. So what explains? Now, 3 days later, 13 June, Israel launches attack against Iran. On 15 June, General Asim Munir has lunch with President Trump. The same day, Pakistan announces closure of 5 land border trading posts on Iran border. So there has been some deal, and in fact it goes back. In the middle of Operation Sindoor, IMF announced $1.4 billion assistance to Pakistan for countering climate change. Now, IMF is controlled by America. So something has been cooking. I think this was all preparation for the strike against Iran. That battle is not yet over. And hence the second invitation. And this time again, he has gone on the occasion of change of guard in CENTCOM. So it's the relationship with the CENTCOM of US, whose main focus right now is Iran. So, do you think that Pakistan has basically compromised on Iran front? Indeed, but it's a very, very sensitive issue because the domestic rhetoric is that Pakistan is against Israel, which it describes as a Jewish state. In the same speech of 16th April, where he mentioned ideology of Pakistan and two-nation theory, he also described Israel as a Jewish state. So it has enormous explosive potential if this thing comes out in public domain in Pakistan. It also complicates Pakistan's equations with neighboring Iran as well as with China, which you mentioned earlier. Sir, but there is another school of thought which is saying that Trump has business interests in Pakistan, like I think cryptocurrencies, or also rare earth and oil. So many things are being spoken about. So, do you think that is all just cover up? I think it is laughable. Pakistan's economy is going down the tube. Who can have economic interests in Pakistan? It has no capacity to return. It lives on day-to-day subsistence from its donors. Its total foreign exchange is $12 billion. And that is there because its donors have rolled over $16 billion assistance. If they call the debt, Pakistan will be bankrupt tomorrow. So I don't think there's any possibility at all of Trump seeing or anyone seeing any deal, in economic deal in Pakistan. So far as oil is concerned, Pakistan imports 85% of its oil. Where does it have capacity to export? So, you have served there, sir. So, how do you look at the situation? You mentioned that it is imploding. What do you mean when you say it's imploding? Because they look in control when you see it from outside. So, do you think Balochistan is imploding, or what is not working out for them? Nothing is working out for them. Now, Balochistan and Bajaur in Khyber Pakhtunkhwa, these are outlying areas from Pakistan's point of view. Pakistan Army's legitimacy
is being challenged in Punjab, which is the heart of Pakistan, and from where most of the army recruitment takes place. And this is where events of 9th May 23 took place, when the Lahore Corps commander's residence was ransacked and the army headquarters were attacked in Rawalpindi. So that challenge remains. Imran Khan has been put behind the bar, but his support is pervasive, not only outside but within the army, and this is why a number of senior generals were sacked. So Asim Munir presides over a divided house. So, do you think this situation can really turn bad very soon? I can't give you a timetable, but it's an extremely precarious situation for Pakistan, for its army, and for its army chief who goes around strutting, making loud claims. Sir, as we know that foreign policy and strategy is all about timing. So, don't you think that the timing for India is very, very wrong right now, because India was the victim of terror, India retaliated, but we are seeing other countries are standing with Pakistan. We have seen Turkey, we have seen Azerbaijan. What's there? You know, Turkey is Pakistan of the Middle East, living on foreign dole and living off the geopolitical rent of its location. Azerbaijan is a tiny petro state. So their support only highlights Pakistan's isolation. No, but the US is now also backing themselves. I explained earlier that US's backing is purely temporary. It is linked to their interest in Iran and whatever services Pakistan has rendered to US military operations against Iran. Sir, give us a sense of Chabahar port. You have recently, like not recently, but of late you have negotiated that. What is the status? I negotiated Chabahar as Indian ambassador from 2013 to 2015. Chabahar is a strategic port for us and for Iran. It's the only Iranian port which is outside Hormuz Straits. So for them, it's a lifeline. And for India, it's our access to not just Afghanistan, but also Central Asia. Sir, now what India should do now? What is your suggestion for India? Like you see, so much is happening across the border. What will be India's plan of action now to counter this? Because China and US are two big powers, and they seem to be standing with them, not with us. I think we should get rid of our obsession with Pakistan. It's a tiny state and nobody can bail them out. You know, the Chinese emerged as the largest donor over a period of time. But last 2-3 years, if you look at the IMF reports, the flow of Chinese aid or credit to Pakistan has now come down to a trickle, because Chinese don't want to lose their money on a state which is going down the tube. So we don't have to bother about Pakistan, but we have a bigger challenge, and that is our northern border neighbor, that is China. So now we seems to be coming closer to China. As we talk, the foreign minister is here. Prime Minister is also visiting China soon. So do you see it as an alternate to US now after the tariff? You know, these are geopolitical equations, do not depend on individual incidents. Tariff relates to the market. We run a $47 billion surplus with US. We run a $97 billion deficit with China. So China is no substitute for US market. And I think we'll have to let situation settle down, and perhaps some movement is already taking place. I think President Trump has indicated that there's a rethink on the oil sanctions, and I think there's a realization they can't really sustain it. Sir, you served in Pakistan. Can you give us a sense how was it? And there was a very talked about or very sad incident which happened with you there.
I think you are probably the only diplomat who was shown the guns by ISI. So give us accounts, sir, about that. This happened in June 92, and the immediate background was Operation Cleanup. This was the first military operation launched by Pakistan Army against the Muhajirs who created Pakistan. And 40 years down the line, they became the victim of military operations by Pakistan Army. The operation was launched on 27th May. The first attack on me took place on 9th June. The second attack took place on 16th June. I had 3 guns pointed at me, one at point blank range on my temple, 2 across the bonnet with my wife and 2 children at the back. This was 9th June. And the second attack, I was alone, but the same drama played out. And So can you please explain what happened? Like, did they stop you? How? Can give us a blow by blow account, sir, if possible. I was returning from a colleague's place after dinner with my family in the car, and a Suzuki tried to overtake us, blocked the car, and suddenly 3 men jumped out with guns, and I tried to instinctively duck, took my car over the footpath and headed straight to the nearest police station, even though my house was next door, but I knew that if I stopped, they will catch up with me. So I was trying to reach a police station which was 5 kilometers off, and there followed a wild goose chase. And incidentally, I had 2 eyesight men behind me on the motorcycle. After some time, those attackers who had come in the car, they turned back and left. I reached the police station. It took 6 hours before the police lodged the report, because I believe the station SHO was trying to seek approval, and this process went right up to the top to Prime Minister's office. Nawaz Sharif was the Prime Minister, and when he got the approval around 4 in the morning, then the FIR was registered and I came back. A week later, the same incident, this was in broad daytime. So as High Commissioner Lamba, who came after the second incident, said, Dinkar, they were trying to show you they can do this at any time. This was an attempt to intimidate. I stood my ground. And did they point a gun on your head? Or? I had a gun at point blank range on my temple and 2 across the bonnet, first time, and second time the same drama. And I was driving. And unlike other cases, to begin with, there has been no other case where they took out guns. There have been beating, which is not too uncommon. But after any such incident, the diplomat was brought back. I stayed at my post. Why? High Commissioner Lamba, when he came after the second incident, he's no more, and I have great regards for him. He called me and my wife to his hotel suite, and he said, Dinkar, I have a request to convey to you, and the request is from Foreign Secretary, who was Mr. Jain Dikshit. And the request was, don't ask for a transfer, because if you ask for a transfer, we'll have to give you the transfer, but it will give the Pakistanis a wrong signal. And I said, sir, I'm not asking for a transfer. It's part of my occupational hazard. But it's no part of my wife's occupational hazard, and even she's not asking for a transfer. So we stayed on. 6 months later, Babri Masjid took place. By that time, I had become Deputy Consul General. I had gone initially as Consul. By the time Babri Masjid took place, I was Deputy Consul General. Mr. Rajiv Dogra was Consul General. On 8th December, 2 days after Babri Masjid, a mob, which was incited by ISI, broke into the Consul General's residence, where his wife, Mr. Dogra's wife, and 2 children were there, and ransacked the house and set it on fire. And after that, I had to arrange for evacuation of 112 women and children at 12 hours notice. So give us a sense how they evacuated. How they were? How they were evacuated then? How you arranged it? There was fortunately, an Indian Airlines flight coming next day. And those days, Indian Airlines used to fly to all the neighboring countries. It was coming from Bombay.
And once I got the instructions from Mr. Lamba, he gave the instructions that evacuate all the women and children. So it was decided that we'll do it. There were some other incidents, the concerned Joint Secretary at headquarters said that he'll arrange for direct flight, and then he was not communicable for 12 hours. And there was a lot of uncertainty. I told him when he called next day, still he had no answer. And he was still saying that he'll arrange a direct flight. I said that, these families, these people have to inform their families back home to come and receive them. So they need to know where they are being taken. And those days there were no mobile. So we decided to evacuate them on Indian Airlines flight, which landed next day around midday, and they were evacuated to Bombay, and from there they were brought to Delhi. So there was no diplomatic flare-up after this incident of gun? Like normally, if an incident like this happens, it's totally against Geneva Conventions and safety and security of diplomat is questioned. It's a very, I feel very anguished. The first statement on my incident was issued by a man called John Major, who was then British Prime Minister. This is not a matter of pride for me. It's a matter of great anguish. I do not blame the ministry or the government. There was a local factor. The Consul General had not informed either the High Commissioner or the ministry. After the second attack, Mr. Lamba realized that there was something wrong and he came down, which was a great relief to me. And I'm very grateful to Mr. Jain Dikshit, who's no more. He was then Foreign Secretary. He issued a very strong statement. So both these people are no more, but I'm very grateful to them. पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप एक किताब आ रही है जो आइडियोलॉजी स्ट्रैटेजीज एंड इंटरेस्ट ऑन पाकिस्तान, इस पर इसका तथ्य क्या है, लाइक इसमें इसका क्रक्स क्या है? पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है, ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई है और ये एक विचारधारा की बेसिस पे बनी, जिसको उर्दू में पाकिस्तानी कहते हैं नज़रियाए पाकिस्तान। और ये नज़रिया किसका था? सर सैयद अहमद, इकबाल और जिन्ना। ख़ास तौर से सर सैयद अहमद और इकबाल। सर सैयद अहमद ने 1888 में मेरठ की एक स्पीच में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, और अगर अंग्रेज़ चले गए तो जब तक एक कौम दूसरे कौम को हरा के और उसका सिर नीचा नहीं कर देगी तब तक यहाँ कोई शांति नहीं होगी। तो उस समय तो मुस्लिम लीग नहीं थी, मुस्लिम लीग उसके 25 साल बाद बनी। टू नेशन थ्योरी का ये पहला स्टेटमेंट था। और उसके बाद इकबाल साहब आए, उन्होंने कहा 1930 की अपनी इलाहाबाद की स्पीच में कि इस्लाम में धर्म और राज्य में कोई अंतर नहीं होता। और दूसरा उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज़ कही, उन्होंने नेशनलिज्म का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नेशन स्टेट्स के बनने से मुस्लिम उम्मा वीक हो जाएगी। उन्होंने यूरोप का उदाहरण दिया जहाँ रिफॉर्मेशन से रिलीजन की पावर कम हो गई थी, वो नहीं चाहते था कि इस्लाम के साथ हो। अगर आपको उस समय के बैकग्राउंड में देखें तो बड़ी अजीब चीज़ थी, क्योंकि नेशनलिज्म की तो पूरी वेव स्वीप कर रही थी एशिया और मिडल ईस्ट में, और उस समय एक एशियन इंडियन कहे कि नेशनलिज्म अच्छी चीज़ नहीं है, इसका फ़ायदा सिर्फ अंग्रेज़ों को था। और इसीलिए उनके अंग्रेज़ों से इतने अच्छे संबंध थे, उनको अंग्रेज़ों ने नाइटहुड की टाइटल दी। तो अभी मुनीर की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उससे काफ़ी मिलती जुलती है इस तरह के ख्यालात से। साहब, मुनीर का स्टेटमेंट जो इकबाल की विचारधारा थी उसी की परिणति है। इकबाल की विचारधारा में मजहबी कट्टरता और पैन इस्लामिज्म, ये दो चीज़ें थी। वही विचारधारा आगे बढ़ी। लियाकत अली खान ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन लाए, जिसमें कहा कि अल्लाह हैज़ सॉवरेनिटी ओवर एंटायर यूनिवर्स।
Now, this goes against the principle of parliamentary sovereignty, because in a democracy, people are sovereign, parliament is sovereign, not the divine. So, divine sovereignty goes against the principle of parliamentary sovereignty. उसका तीसरा चरण था जनरल जिया, क्वेटा मिलिट्री स्टाफ कॉलेज की टेक्स्ट बुक में कहा गया है, वो ब्रिगेडियर एसएम मलिक ने लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि टेररिज्म इज नॉट अ मीन्स टू रीचिंग एन एंड, टेररिज्म इज द एंड इन इटसेल्फ। और उस किताब का जो इंट्रोडक्शन है उसमें जनरल जिया साहब ने खुद लिखा है कि ये बड़ी अच्छी किताब है, इसमें तो टेररिज्म को एक तरह से पाकिस्तानी स्टेट सपोर्ट कर रही है। जिया ने लिखा उस इंट्रोडक्शन में कि एक मुस्लिम सिपाही जो एक मुस्लिम आर्मी में लड़ रहा है इस्लामिक स्टेट के लिए, वो तब तक प्रोफेशनल नहीं हो जाएगा जब वो पूरा इस्लाम का को ओढ़ ना ले। नाउ इसके क्या मतलब है, वो पाकिस्तानी सिपाही और पाकिस्तानी स्टेट की बात नहीं कर रहे थे, वो इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे थे। ये तो जिहाद का नारा था। मुनीर साहब उसी विचारधारा के। तो आपको लगता है मुनीर का रहना भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है? मुनीर साहब एक पासिंग फेज हैं, और जो कोई भी इंडिविजुअल वो नेशनल बैलेंस में तो चेंज कर नहीं सकता है। उनके अंदर इतनी समस्याएं हैं। जो उनकी 16 अप्रैल की स्पीच जो आपने उसका पहले जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और कश्मीर कहा था, उस स्पीच का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान की समस्या पे था। उससे पता चलता है कि वहाँ पे उनकी समस्याएं कितनी ज़्यादा हैं। और उसके बाद अब बजावर में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो आपको लग रहा है पाकिस्तान टर्मोइल में इस समय बहुत बुरे? एकदम। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है अभी 2 दिन पहले, जिसमें सारी पार्टीज ने मिल के कहा है ये मिलिट्री ऑपरेशंस बंद किए जाएं। 2 मेजर पार्टीज उस डिक्लेरेशन से अलग हो गई, वो है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की PMLN और PPP। मगर जो बाकी पार्टीज़ हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, जिसमें फजलुर रहमान साहब हैं, जिसमें MQM है, वो सब ने मिलके कहा ये मिलिट्री ऑपरेशन बंद हो। तो इसके मतलब कि वहाँ तो पूरी अंदर फूट है। तो ये जो मुनीर भारत के खिलाफ एक हार्ड स्टैंस ले रहे हैं, अभी अमेरिका जाके भी वो धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर, और पूरी दुनिया को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, तो आधी दुनिया को। तो अब लगता है ये सब कवर अप है, अपने आप को एक इस्टेब्लिश करने का एक तरीका है उनका। ये सब वो अंग्रेजी कहावत है, बॉय विस्लिंग इन द डार्क। तो वो एक बिखरते हुए समाज और एक टूटते हुए राज्य में जो सेनाध्यक्ष वो जो भी बात कह ले कि वो आसमान गिरा देगा, उसके कोई माने नहीं होते। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए कि वो जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि वो कह रहा है कि हम खुद जाएंगे, अपने साथ आधी दुनिया को लेते जाएंगे, वो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं धमकी दे रहा है, तो वो क्या कर दे। बट वो तो आजकल बहुत करीब है अमेरिका के। मेरे ख्याल से अमेरिका का फैक्टर ज़्यादा हमें ओवरप्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प साहब जैसा जाना जाता है ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं। तो वो तो सौदेबाजी है, और सौदेबाजी है कि उनको ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है ईरान का। तो क्या ज़रूरत क्या है, क्या आपको लगता है डील हुई? देखिए, 13 जून को इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। 15 जून को मुनीर साहब को वाइट हाउस में खाना खिलाया गया, और उसी दिन पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि जो बॉर्डर पोस्ट हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में 5 बॉर्डर पोस्ट क्लोज कर दी। तो ये तो ईरान की पीठ में छुरा भोंकने की बात है। सन 65 की लड़ाई में जब हिंदुस्तान से लड़ाई हुई थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स को ईरान ने शान शरण दी थी। जब ईरान पे ख़तरा आया तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उनके तो वो समस्या भी गई नहीं है।
लेकिन ये तो कहते हैं कि वहाँ पे रेयर अर्थ है, ऑयल है। अमेरिका ने बोला है कि अब उनके साथ हम ऑयल निकालेंगे वहाँ से। देखिए, पाकिस्तान अपने ऑयल का 85% प्रतिशत मात्रा इंपोर्ट करता है। तो अगर उनके पास इतना ऑयल है तो क्यों उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। और रेयर अर्थ, वो एक कॉपर की माइन है जिसके बारे में वो बलूचिस्तान में है। वो 25 साल से बात हो रही, वहाँ इतनी अशांति है। तो ये तो साहब कहने की बात है। और अगर अमेरिकन्स बलूचिस्तान पहुँच गए तो क्या बैलेंस होगा चाइनीज़ के साथ, वो भी ग्वादर में बैठे हुए हैं। और अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने बलूच लिबरेशन आर्मी को टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकन्स कभी ऐसा कदम उठाएंगे ही नहीं। ये तो कहने की बातें हैं। तो अब यहाँ की जियो स्ट्रेटेजिक जो कंडीशंस हैं, जो पोजिशनिंग है, वो तो चेंज हुई है कुछ आफ्टर दिस टैरिफ थिंग। पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं लगाए गए, मुनीर को वहाँ बुलाया गया, फिर इधर चाइना भी उनका दोस्त है। भारत के लिए तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस बिगड़ी हैं। देखिए, चाइना ज़रूर उनका दोस्त है और उनका सबसे बड़ा महाजन रहा है। लेकिन पिछले 3 बरस में अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट्स देखें, जो चाइनीज़ क्रेडिट और एड पाकिस्तान को आ रही थी, अब वो नाम मात्र को रह गई है। क्योंकि चाइना अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता। उनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अभी भी पाकिस्तान में है। अब देखने की बात है कि अगर पाकिस्तान सच में टर्न कर रहा है अमेरिका की तरफ, तो उसकी जो चाइना से इक्वेशन है उस पर क्या असर पड़ता है और उसके जो ईरान से संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ता सर, आखिर में आपसे पूछूंगा, आपने पाकिस्तान में सर्व किया है, कुछ ऐसे वाक़यात आपके साथ हुए उसके बारे में आप बताएंगे? आपको अब आपके ऊपर बंदूक तान दी गई, ऐसा सुना, और आपको वहाँ से भागना पड़ा। है। साहब, मैं भागा नहीं। नहीं, मतलब उस स्पॉट से आपको निकलना पड़ा। आप पे साहब, मैं ये जो वाक़या हुआ है, मैं उस समय कौंसल था इंडियन कौंसलेट में। जून 92 में हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि थी कि 27 मई को ऑपरेशन क्लीन अप पाकिस्तान आर्मी ने मुहाजिर्स के ख़िलाफ़ लॉन्च किया। ये पहला मिलिट्री ऑपरेशन था जो मुहाजिर्स के ख़िलाफ़ हुआ है। और ये भाग्य की विडंबना है मुहाजिरों के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, 40 साल बाद उन्हीं के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था। अब मैं आगे ज़्यादा क्या कहूँ, उसी पृष्ठभूमि में ये मुझ पे अटैक हुआ। 9 जून को पहला, और उसके बाद 16 जून को। और मेरे ऊपर 3 बंदूकें थी, एक कनपट्टी पे थी, 2 गाड़ी के सामने मेरी पत्नी और बच्चे पीछे थे। 9 जून को और 16 जून में मैं अकेला था। इसके घटना के बाद भी मैं वहाँ रहा। 6 महीने बाद बाबरी मस्जिद हो गई, उसके 2 दिन बाद उन्होंने, उस समय तक मैं डिप्टी कौंसल जनरल हो गया था, कौंसल जनरल का घर जला दिया। और तब निर्देश आए हाई कमिश्नर से कि औरतों बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। तो 112 औरतें और बच्चे 12 घंटे की नोटिस में कराची से निकाले गए। तो कैसे निकाला आपने? वो साहब, अगले दिन, ये किस्मत की बात थी, इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट आ रही थी। उस ज़माने में इंडियन एयरलाइंस नेबरिंग कंट्रीज़ में फ़्लाइट ऑपरेट करती थी। तो जब हाई कमिश्नर साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा, उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने अप्रूव कर दिया है कि कल तुम औरतों बच्चों को भेज दो। तो मैंने उनको बताया कि ये फ़्लाइट आ रही है। उन्होंने कहा वो जो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री में है उनको कहेंगे मुझसे बात करें। जॉइंट सेक्रेटरी का फ़ोन आया, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि वो एक डायरेक्ट फ़्लाइट अरेंज करेंगे दिल्ली के लिए। मैंने कहा अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप हमें बता दीजिए, क्योंकि मुझे स्टाफ को बताना होगा, उनको अपने परिवारों को बताना होगा कि कहाँ उनको लेने आए। 12 घंटे तक वो गायब हो गए। और अगले दिन करीब 11 बजे फिर से फ़ोन आया। फिर तब तक उन्होंने कुछ नहीं इंतज़ाम किया था। तो मैंने उनसे कहा, मैं काफ़ी, आप समझ सकते हैं, तनाव की स्थिति थी। मैंने कहा हम तो भेज रहे हैं बच्चों और औरतों को। वो 1 बजे की फ़्लाइट थी और
वो फिर वो फ्लाइट उनको लेके बॉम्बे गई और फिर बॉम्बे से उनको दिल्ली लाया गया। सर आज एक और मुद्दा उठा है, इंडस वाटर ट्रीटी। आज ये बोला जा रहा है कि ये नेहरू जी ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, इसमें पार्लियामेंट को भी उन्होंने उसमें नहीं लिया था, लाइक उन्होंने पार्लियामेंट से सलाह मशवरा नहीं किया था इसको लेके, और सीधा सीधा गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान को, इंडियन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। क्या अभी आपको लगता है जब हमने इसको अभ्यास में डाला है तो इसने सबसे बड़ी क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को? साहब अभी वहाँ खलबलाहट हुई है, अभी क्षति नहीं पहुंची क्योंकि हमने पानी रोका तो है नहीं। और मेरा अपना मत है, मैं तो साहब रिटायर हो गया हूँ, मैं सरकार की तरफ से बोल नहीं सकता और ना ही मैं ऐसी कोई आपको ऐसा इम्प्रेशन दूंगा। मेरा अपना मत है कि ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं करनी थी, इसको टर्मिनेट कर देना था। क्योंकि जब तक आप टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ पे डैम बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं जस्टिफाई कर सकते। सस्पेंशन तो टेम्प्रेरी चीज़ है ना, डैम बनाने में तो लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट एक टेम्प्रेरी पॉज के लिए नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इसको तो टर्मिनेट कर देना चाहिए। उसके साथ हम पाकिस्तान को आमंत्रण दें कि आप आइए हमसे मिल के बात करिए, हम एक नई ट्रीटी बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका पानी रोक दीजिए, मगर इस तरह की वन साइडेड ट्रीटी, अनइक्वल ट्रीटी जिसमें 80% पानी जो लोअर राइपेरियन है और जिसकी जनसंख्या हमसे 1/7 है उसको मिल गया, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। तो ये क्या आपको लगता है देश के साथ कुछ धोखा हुआ था ये साइन ट्रीटी करना? अब ये तो इतिहास ही बताएगा, मगर हाँ ये बड़ी गलती तो ज़रूर थी। और ख़ास तौर से आप उसका अगर बैकग्राउंड देखें, ये ट्रीटी नेगोशिएशन शुरू हुए हैं करीब 57 करीब 1960 में साइन हुई है। ये उस समय हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर था, पाकिस्तान अमेरिका से अलाइन था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अमेरिका कंट्रोल करता है और वर्ल्ड बैंक उसमें उनका इस ट्रीटी में वो भी हिस्सेदार हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते थे, वो तो वन साइडेड ट्रीटी होनी ही थी। तो कोई ऐसी हमें उस समय आवश्यकता नहीं थी कि ये समझौता करें, और इस समझौते से कोई ना लॉन्ग टर्म फ़ायदा हुआ ना कोई शॉर्ट टर्म फ़ायदा हिंदुस्तान को हुआ, फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को हुआ है। मेरा आखिरी में सर सवाल ये है, तो लबोलुबाव आपके कहने का ये है कि ये सब टेम्परेरी है, ये मुनीर और ये यूएस टैरिफ और पाकिस्तान का अमेरिका से करीब आना, तो भारत के लिए ऐसी कोई खतरे की घंटी नहीं है और पाकिस्तान खुद अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स में डूब रहा है? साहब अगर आप ऐतिहासिक परिवेश में देखें तो इस तरह के बड़े परिवर्तन आए हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, फिर वो चाइना के साथ हो गया, 9/11 के बाद फिर वो अमेरिका के साथ हो गया, और अमेरिका के साथ होने के बावजूद उन्होंने अमेरिकन हितों को नुकसान पहुंचाया अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका को बड़े ही ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस में काबुल से विड्रॉ करना पड़ा। तो ये सब परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, जो हमें देखना है कि वो देश कहाँ जा रहा है। वो मुल्क जो है उसमें इतनी समस्याएं हैं और कोई कमिटमेंट नहीं वहाँ, ना तो आर्मी का ना वहाँ के एलीट का अपने मुल्क के लिए। जो टैक्स बेस है वो इतनी नैरो है क्योंकि पैसे वाले टैक्स नहीं देना चाहते हैं। सेविंग्स रेट 9% है, हिंदुस्तान का करीब 30% है, 28% है। चाइना का 45% है सेविंग्स रेट। तो चाइना से दोस्ती तो करते हैं मगर चाइना से सबक नहीं सीखते। तो ऐसे मुल्क का क्या होगा? तो भारत चाइना के करीब आ रहा है आपको लगता है आफ्टर द यूएस? ये साहब इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पड़ोसी देशों से अगर संबंध सुधर जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। आज उनके विदेश मंत्री हैं, तो देखते हैं वो क्या होता है। सर थोड़ा अपनी किताब को दिखाएं आप और बताएं इस बारे में थोड़ा,
आपने बताया शुरू में। जी तो साहब, ये किताब ये आपका पूरा तजुर्बा आपने इसमें समेटा हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब होगी मुझे लगता है पढ़ने के लिए। साहब ये किताब डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इतिहास नहीं है, ना ही किसी पाकिस्तानी रूलर का इतिहास है। ये जो नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं, जो विचारधारा, उससे पाकिस्तान के अंदर और बाहर की राजनीति में क्या असर आया है वो इसमें जिक्र किया है, और उसका आर्मी पे क्या असर आया है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मगर बड़ी महत्वपूर्ण है। आर्मी की टेक्स्ट मिलिट्री स्टाफ कॉलेज की टेक्स्ट बुक में लिखा है कि आतंकवाद किसी मंजिल के पहुंचने का साधन नहीं है, आतंकवाद ही मंजिल है। और और ये मिलिट्री की बुक में लिखा है। ये वहाँ मिलिट्री स्टाफ कॉलेज, और लिखा था, ये किताब लिखी है ब्रिगेडियर असीम मलिक ने, और उस किताब का इंट्रोडक्शन लिखा था जनरल ज़िया साहब ने। उन्होंने लिखा ये तो बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने लिखा कि एक मुसलमान सिपाही मुस्लिम आर्मी में इस्लामिक स्टेट के लिए अगर लड़ेगा तब तक वो प्रोफेशनल नहीं हो सकता जब तक वो मज़हब के रंग में अपने को ना डुबो ले। तो ये तो साहब जिहाद की बात है, वो पाकिस्तानी सिपाही की और पाकिस्तानी सीमाओं की नहीं बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम स्टेट की बात कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं। और आप वही विचारधारा आसिम मुनीर के की स्पीचेस में देख लीजिए। उन्होंने कहा, आसिम मुनीर ने 2 महीना पहले, कि जो इस्लाम और जो व्यक्ति इस्लाम और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं एक्सेप्ट करता उसको मैं पाकिस्तानी मानता ही नहीं हूँ। तो मतलब सिटीजन की परिभाषा है कि वो इस्लाम को माने, तो वहाँ पे अल्पसंख्यकों का क्या होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।